So today we are going to cover the topic of the according to the syllabus, which comes in practical, but we are going to cover it theoretically. Okay, it's going to be theoretical. So let me share my screen to you so that again I would be able to show you that this is this has been covered. If some of them would be remaining, then I will be covering it later. Okay. So the concept and the recitation of the hymns and the prayers that has been completed. The cleansing practices having the techniques, contraindications, benefits has been taken, Neti, Trataka and Kapalabhati. The next is the loosening practices or the Chalana Kriya having the techniques, contraindications and benefits that will be covered today. So I'm going to have the introduction today, and all of these I'm going to have, like these are here, and in the complete describing about each and everything, the loosening practices like the neck movement, the shoulder movement, the Bhuja Vali Shakti Vikasaka, Purna Bhuja Shakti Vikasaka, trunk movement, knee movement, that will be cleared one by one in the classes later. Today, I'm going to cover all of these practices, the techniques, and all of it, having the introduction about it. अच्छा आप सब बताएं कि आपने जब भी कभी कोई जॉइंट मूवमेंट्स किया है तो जब भी कोई आसनास हम प्रैक्टिस करते हैं मैट पे तो हम हमेशा अपने जॉइंट मूवमेंट्स पे वर्क करते हैं तो क्या इसमें आप बता सकते हैं जब कभी आपने आसनास प्रैक्टिस किए तो उसमें जॉइंट मूवमेंट्स का आपको क्या लगता है कि इम्पोर्टेंस क्या है क्यों जरूरी है जॉइंट मूवमेंट्स के लिए अपनी बॉडी जॉइंट मूवमेंट से अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना क्यों जरूरी है कि आप अपने लाइक यू आर एनर्जाइजिंग योर सेल्फ एंड मेकिंग द प्रिपरेटरी वार्म अप हाँ मैं इंग्लिश में भी बोल रही हूँ सो प्लीज सी दैट इफ यू आर हैविंग द प्रिपरेटरी वार्म अप्स right how those preparatory warm-ups are going to help you later to do the asanas and especially in the yoga practice how these preparatory warm-ups are utilized so that you are able to find some good benefits so आपको क्या लगता है what do you think that it is important why do you think it is important the joint movements the loosening practices the preparatory warm-ups why is it important anyone they enhance the mobility of the body part. It gives the flexibility. It avoids the injury. Yes. Does it give the importance to your gross body or your subtle body as well? I hope you understand the gross body and the subtle body, right? So up to a certain level, of course, it is not having its effect on the subtle body, but does it affect on the subtle body by any how, by any means? Okay, don't know the difference. Okay. So, first of all, before I take this particular step of these loosening practices, so the loosening practices are taken as the Sthoola Vayama, okay, and the which is working on your gross body. So Sthoola means sharir, Sthul means gross. So it is working on your body.
the Sthoola Vayama. The Sukshma Vayama is working on your subtle body. So it is having your subtle body is something which is not seen, but it has its existence and it is in the form of energy, right? That is the subtle body. So the Sukshma Vayama works on your subtle body. The Sthoola Vayama works on your physical body. Okay. So having the gross body, it gives an energy and effect to your physical aspect. The Sukshma Vayama gives the mental abilities, the intelligence, and as well as it helps in giving you a better way of your clarity and your thinking, your way of your probably, of course, your thought process. It affects that as well. Okay. So generally, if we are taking any of these practices, it works in such a way which helps you. Now, what happens generally? What do we say that having all of it together? So when you are working on your gross body, so when it is being seen that the gross body, you are engaging your gross body and working on the bandhas as well. You having the mudras, you try to have a proper breathing. You inhale, and according to the flow of your movement of the body, you have your own flow of your breath. You take control of your breath, you take control of the mudras, and probably, if required, the bandhas can also be taken. Okay, you can also apply the bandhas. So that in all becomes a very good way of your practice to see that you are having a good hatha yoga practice, and all of the way you are doing your working towards your gross body and your subtle body. Okay, so let me just first talk about also the Sukshma Vayam and describe about it. It comes in exercises. The Sukshma Vayam also is taken as the important component of yoga. It is seen as that various yoga schools is considering Sukshma Vayam very, very important and essential. So, in fact, in the Hatha Yoga as well, it has been seen that many yogic Sukshma Vayam is understood like relating to bandhas and mudras, because Hatha Yoga talks about bandhas and mudras. It mentions about the asanas, pranayam, meditation, bandhas and mudras. So similarly, the Sukshma Vayam, which involves your in all, complete balance of the body, it also involves it has to have the mudras and bandhas, which is going to have the proper balance of the body and the mind. So that is the aim of the Hatha Yoga, right? So uh, again you will find that this particular Sukshma Vayam was developed by Maharishi Kartikeya ji Maharaj. So on some of these basic essential things that is understood, these are the things which is taken from all of it. The Sukshma Vayam, which is involving the bandhas and mudras, are taken, and some of the aspects, Hatha Yoga, which is some deep aspects or the deep understanding of the bandhas and mudras, are also taken from the Hatha Yoga. So what do we find? That all of it that has been taken in India and in abroad as well. So this aspect has been taken, that bandhas and mudras is really a very complex practices which is done by the advanced yogis. Okay, so these are the things which is given in our yogic texts like the Hatha Yoga Pradipika or the Shiva Samhita and many other texts. Okay, so uh, these becomes one of the aspect of your Hatha Yoga, the textbooks in the Hatha Yoga. Since we find, if we see the science of this yoga practices, okay, so generally the ancient time involved that people were getting rid of all the attachments. They get rid of the attachments from
the world, from their anything, from their relation, from each and everything. They used to get rid of the attachments, and they used to go to the forest and go to the Himalayas, and then yoga they used to practice only for themselves, and among themselves they used to practice. And at that time it was like they were becoming the yogis. And what they have seen, that what have been included, of course, the normal society. If you see the normal people, like we are the sansaris, so we will not understand that what are the things with the help of their practice, because they also used to practice all these asanas, they also used to practice all the pranayams. Similarly, anything that you jump, anything which you think like that you will be able to jump, like skipping the other things and then doing the practices which is like jumping the levels, so that is to be avoided. Levels, I mean, of course, if you do the asanas, the particular person has their own way to respond to the body, but having the understood that if you do the asanas for your benefit, so that you understand what is the experience of yourself to the gross level, and when you have achieved that gross level, and after that those gross level is completely fulfilled, so what next about the subtle body? So it reaches to the subtle body. So even working on that exercises, of course, it also requires a discipline. It is also requiring a lot of tapaha, those eight limbs of yoga in the Ashtanga yoga. Okay, so it requires the tapaha, it requires your vairagya, it requires your abhyasa, even if you are doing the set of exercises which is done in a systematized way. So that fulfilling of your grossest level, or having those exercises at at the grossest level, is going to work with consistency and is going to reach to a point where you will be able to attain the good mastery in your what we say in the meditation, in the ability to have that vairagya, and in the ability to have that energizing your subtle body. So subtle body always comes with that meditative state. So it doesn't mean that if you're exercising, you also are there in your subtle state, even you are exercising or having practiced the set of the uh, yeah, or for the gross body. So depending upon how much time you have devoted to it. Okay, so having all of the yoga systems, so if we talk about the exercises, that becomes something else. But the components of the yoga system, according to us, according to what we have able to be we are able to adopt it with the help of the various texts, and which has been given to us for our benefit, for the society to have a better health benefit that we are able to gain. So those systems are also given in the Hatha Yoga and in the form of the system all of the Sukshma Vayama and the Sthoola Vayama. Okay. So again, these kind of the unique system of the exercises will not be available anywhere. You will see that these are the basic ones and has to be understood from that yogic style itself. It has either a form where you are preparing yourself in a way which is giving you a cultural domain. It is giving you a form which is becoming a way of your, it's very, you can say it becomes really traditional, it becomes sensitive, it becomes powerful, it becomes deeper and scientific, and it is giving you a lot of benefits with having a great experience. And even the people who have practiced it ancient at the ancient times, they have also gained a lot of experience. So again, if we see that if we are doing that in a very quick manner, that quick manner will not give the benefits. It has to be very steady and the slower way to do those set of exercises, or those sukshma vayama. Sorry, the sthul vayama. Okay, having the practice of the sukshma vayama as well. Okay, so when we find that
probably the way that we are able to have include the various organs, right? The various organs. So, of course, very minutely, if we talk about the eyes, okay, that particularly, if we talk about the eyes, if we talk about the nose, if we talk about the ears, if we talk about your neck, if we talk about your joints, the finger joints, if we talk about the fingertips, if we talk about the shoulders or the arms or the arm joints, all of it we do not take care whenever we are having the movement in and out throughout the day. So we are generally working, we are not, we are just thinking that we are taking care of ourselves externally. But to the external level, if we do some set of exercises, that is also external, but it works internally. So if you're able to absorb it and internalize it, that is also going to give you a lot of benefit. But uh, the the thing is to be taken in to be very much alert about it, to take care about it, that it has to be practiced very steadily and not very fast. So having any sort of problem which gives you injury, that has to be avoided. Any problem which is going to affect you later on, that should be avoided. If like anything which can injure you, which can hurt you, that has to be avoided when it is done in such a way. So in that way, you will find in many texts there are various proper instructions given accordingly. There are instructions which is given for these purposes. आप सूक्ष्म व्यायाम को देखते हैं तो आपके सूक्ष्म व्यायाम के लिए, चाहे आप वो नेक के लिए देखें, नोज के लिए देखें, ईयर्स के लिए देखें, आईज के लिए देखें, वो ईच एंड एवरी ऑर्गन, ईच एंड एवरी जॉइंट पे आपका वर्क करता है. So that is going to help you to have an effect on your body, and also is going to help you to reach to the a particular state which is going to be in a proper way to have the one pointedness. आपका एक one pointed और alertness आ जाता है, आपका concentration improve होता है, आपका meditative state भी improve होता है with the time when you are able to be consistent in that particular set of exercises. So when we are talking about you know like again, if we talk about any of the Sukshma Vayam, which has been taken about, having worked on the different regions, having the eyes, the nose, the ears, and everything, the neck, the joints, and the arm joints. So it is taken like that we are working for those, all of these things to the grossest level, okay, which ultimately means like it's a Sthoola Vayam, but eventually it is meant for your subtle body. आपके ये सटल बॉडी के लिए ही है, आपके मेडिटेटिव स्टेट को लाने के लिए ही है. आपका जब वो डिसिप्लिन और विलिंगनेस होगी, आप में कुछ पेन होगा, आप कुछ कंसंट्रेट करोगे, आप एक ऐसी स्टेट में रीच करोगे जहां पे आपको एक खुद से एक अच्छा महसूस होगा. ठीक है, आप धीरे धीरे डे बाय डे अगेन वो प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो क्या होगा, यू विल रीच टू अ पॉइंट कि वो एक सेट ऑफ एक्सरसाइजेस जो हमें एक लगता है कि देर आर द वे दैट इट इज मेंट एज अ स्थूल व्यायाम और फॉर आवर ग्रॉस बॉडी, those things will eventually succeed in such a way that all of those exercises that we are doing, it is for our own, it gives our own way of having the working towards the subtle body. ओके, सो हमारे अगर हम वैसे एक्टिविटीज देखें या वैसे एक्सरसाइज देखें तो बहुत सारी होती हैं. पीपल आर रनिंग, पीपल आर वॉकिंग, तो वो क्या है, दे आर एनर्जाइजिंग देमसेल्फ so that they will find some kind of a change, and they will be able to find that there is some sort of difference that they have given, like they have found out some time for their gross bodies, and will be able to find a peace state of mind after working towards their betterment, after working towards their health benefit. तो जब भी आप कभी अपने खुद के हेल्थ के लिए देखेंगे ना, अगर आप फिजिकल एस्पेक्ट पे देख रहे हैं,
तो फिजिकल एक्सरसाइजेज जब आप देख रहे हैं, चाहे वो रनिंग हो, वॉकिंग हो, जस्ट ब्रिस्क वॉक हो सकता है, स्लोअर वॉक हो सकता है, कोई और एक्सरसाइजेज हो सकती हैं। सम ऑफ द पीपल लाइक यंगस्टर्स दे आल्सो फॉलो द स्विमिंग, मतलब वो स्विमिंग में बहुत उनको ऐसा लगता है कि एक्सरसाइजेज, स्विमिंग बहुत अच्छी है जिसमें people get a kind of a thing that their body has become lighter. So in that way, having that lightedness, you are able to find yourself that your it is working with your body, आपके ये खुद के फिजिकल एस्पेक्ट पे जो है इम्प्रूव हो रहा है, तो डेफिनेटली इट हैज इट्स ओन बेनिफिट। ठीक है। हम जब अपने सूक्ष्म व्यायाम को देखते हैं, जैसे बताया, जैसे आई विल कम टू इट एंड डिस्क्राइब इट इन डिटेल। तो जब हम सूक्ष्म व्यायाम को देखते हैं, वो एक ट्रेडिशनल वे है। ठीक है। इट इज नॉट लाइक द स्विमिंग, इट इज नॉट लाइक रनिंग एंड वॉकिंग। ओके, इट हैज अ डिफरेंट एस्पेक्ट। So it is, although having a kind of aim towards the subtle body, it might be meant as that it is towards your sthoola sharir। ये स्थूल शरीर के लिए हमें लगता है, बट ये आपकी सटल लेवल पे सूक्ष्म तरीके से ये वर्क करता है। ठीक है। तो हमारा, जैसे इवन आप प्राणमय कोशा देखते हैं, ठीक है, हमारा अन्नमय कोशा है, प्राणमय कोशा है, विज्ञानमय कोशा है। तो हम जो अन्नमय कोशा है, दैट इज, आप उसको फ्यूल करते हैं अपने खाने से, ठीक है, अपने भोजन से। तो भोजन पदार्थ क्या है, वो आपको हेल्प करते हैं आपके फिजिकल एस्पेक्ट की नीड के लिए। लाइक यू शुड बी एनर्जाइज, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू मूव एट ऑल। तो क्या होगा, वो आपका अन्नमय कोशा है। आपका प्राणमय कोशा, ठीक है, प्राणमय कोशा, we are able to do the pranayam, connecting it with the breath and able to have the calmness in the mind। हमें अपने मन में जितने भी चित्ता की वृत्तियां होती हैं, उसको कम करने के लिए, उन सभी वृत्तियों को खत्म करने के लिए हमारे पास प्राणायाम है। सिमिलरली, प्राणायाम के साथ साथ जो प्राणायाम है आपके सटल बॉडी पे वर्क करता है, इट इज ऑल्सो वर्किंग एट द सटल बॉडी। वाई वी आर, is it seen that what calming effect it gives to the mind? We are not able to see, but it is something that you experience it. Similarly, even if you're doing any kind of a gross body exercise, आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, हमें लगता है हम फिजिकल एस्पेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि हम ग्रॉस लेवल पे, या ये बहुत ही ऐसी एक्सरसाइजेस हैं जो सिर्फ बॉडी बॉडी, इट्स जस्ट वर्किंग ऑन द बॉडी, बट इट इज नॉट। इट इज वर्किंग with your with your particular aspect, that it is reaching to at a this particular aspect, that it reaches your subtle body as well, right? So again, there are many differences from the yogic point of view. If I talk about the traditional style of the yoga practices, the traditional way or the traditional philosophy, it actually gives those kind of benefits with the help of the breathing. You get your breath work proper with the help of having working on those set of exercises, and it is bringing some kind of the concentration, that you are able to attain that concentration। आपका ध्यान अच्छा होने लगता है, आपकी श्वास अच्छी होने लगती है, और आपके जितने भी you are having the different motions throughout, जो आप वैसे, it is not to be practiced on the daily basis, so those motions, those motionary things, those movements will be most of the time giving you benefit with the help of the Vayayam। Okay, now at that time your breathing can go really fast, your breathing can go really slower। ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैज टू बी सीन दैट यू आर ब्रीदिंग फ्रॉम योर नोज। कोशिश ये करनी है कि आपकी जो ब्रीदिंग है वो नोज से हो, नोज नेजल पैसेजेस से हो। ठीक है। that is something going to give you the benefit। if you're trying to inhale from the mouth, that is a hunger for breath, and that means the lungs do not have the enough capacity to breathe। but when we are making it, our body should be adept in such a way that we are giving itself a proper way of breathing। तो हमारा प्रॉपर वे ऑफ ब्रीदिंग हमेशा कैसा होता है, अगर हम नॉर्मली भी ब्रीथ करते हैं बिना किसी व्यायाम के भी, तो वो होता है कि आप नोज से ब्रीथ करते हैं, आपका एब्डोमिन रीजन में क्या चेंजेस होते हैं, एब्डोमिन में क्या चेंज आता है, और जैसे ही आप एक्सेल करते हैं तो एब्डोमिन में क्या चेंज आता है।
तो इवेंचुअली हम जितने भी ये सब देखते हैं कि एब्डोमिनल ब्रीदिंग होनी चाहिए, नॉर्मल रेस्पिरेशन एवरीबडी इज डूइंग एंड वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट। तो हमारी ब्रीदिंग की प्रैक्टिसेस अच्छी होती हैं, और जब हमारी ब्रीदिंग की प्रैक्टिसेस अच्छी होती हैं तो हम अपने फिजिकल एस्पेक्ट के साथ साथ हम अपनी ब्रीदिंग को इम्प्रूव करते हैं, हम अपनी ब्रीदिंग को समझते हैं। और एट दैट टाइम हमारे को अगर कोई भी इंजरी होनी होगी ना, जब भी हम कोई सेट ऑफ एक्सरसाइजेस करेंगे, तो वो नहीं होगी, क्योंकि हम ब्रेथ को साथ में जोड़ रहे हैं। वी आर एबल टू हैव दैट ब्रेथ वर्क ऑल अलोंग टुगेदर, and it is bringing the concentration at at every aspect, at every level, like having the body awareness। वो concentration आपको एक body awareness देगा, वो आपको एक mental awareness भी देगा। ठीक है, आपका कितना अच्छा bodily awareness होता है, कितना अच्छा mental awareness होता है, वो भी बढ़ने लगता है। ठीक है, तो बेनिफिट्स बहुत ही अच्छे हैं। और प्रेफरेबली जब भी आप कोई भी व्यायाम देखें, तो हैव इट दैट यू शुड हैव अ बाथ लाइक अ विद अ वार्म वाटर। ठीक है, एंड गिव सम टाइम आफ्टर द बाथ एज वेल, एंड बिफोर हैविंग द व्यायाम have some different kind of a food, just like you can have a very lighter food, you can have some kind of fruits, you can have some like you can have some almonds, nuts, anything, and try to have it in the not in the indoors but the in the open air. That will be better. So again, if the temperature is like too cold, avoid having it in the too cold kind of a situation where it is too cold and you still doing it। तो ऐसे इतना भी हमें ये नहीं देखना कि हम बिना टेम्परेचर को देखे हुए we are doing the set of exercises। You have to keep yourself, very comfortable, in the comfortable way, that you are not making your body very uncomfortable in any of the way, whether it's from with the temperature, whether it's the clothes, whether it's any form, whichever way that you feel like that it is you are making yourself practice without having anything। तो कभी भी अपनी अपने आप को अनकंफर्टेबल क्लोथिंग से, टेम्परेचर से, या किसी भी तरीके के खाने से भी नहीं करना है। और have to you can also practice the vyayams either in the morning or in the evening, or even if you have it once a day। तो दिन में एक बार भी आप अगर अगर ये सब व्यायाम को प्रैक्टिस करें, तो आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी। सिमिलरली अगर मॉर्निंग और इवनिंग में 2 बार आप अगर प्रैक्टिस करते हैं तो भी अच्छा है। ठीक है, नाउ आपके जितने भी लेवल्स ऑफ कैपेबिलिटीज होती हैं आपकी पर्सनालिटी में, आपके फिजिकल एस्पेक्ट में, आपके मेंटल एस्पेक्ट में, ये बहुत हेल्प करता है। ये बहुत ही अच्छा आपके व्यायाम का एक जो आपके पर्सनालिटी पे इफेक्ट आता है, वो बहुत अच्छा आता है। तो mental aspect also physical aspect, so it's not only for the ones who are young people। अगर आप देखें कि जितने भी एज ओल्ड लोग हैं, अगर वो भी व्यायाम करते हैं, उनमें भी बहुत चेंजेस पाए जाते हैं। यू विल बी एबल टू फाइंड कि उनमें भी अगर आपकी मेंटल कैपेबिलिटीज होती हैं, उनमें भी मेंटल कैपेबिलिटीज अच्छी होने लगती हैं। दे फाइंड देमसेल्फ हैप्पी इंस्टेड ऑफ फीलिंग बोर्ड, इंस्टेड ऑफ फीलिंग दैट दे आर बीइंग आइसोलेटेड, या उनको लगता है कि वो अकेले हैं, या फिर बोरियत होती है, या किसी तरीके से। तो व्यायाम इतना बेनिफिट आपको देता है कि चाहे बूढ़े लोग भी हों, सीनियर सिटीजन, आई विल नॉट से बूढ़े, ठीक है, तो जितने भी लोग होते हैं, तो दे विल फाइंड दैट व्यायाम से उनको बहुत ही अच्छा महसूस होता है, बहुत अच्छा लगता है, इम्प्रूवमेंट होता है, एंड दे फील दैट दे आर यंग अगेन। ठीक है, तो जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है, सूक्ष्म व्यायाम से आप अपने आप को बिना किसी आसन के, बिना किसी प्राणायाम के, बिना किसी क्रिया के, ठीक है, आप उनको, अब क्रिया हमने देखी थी कपालभाति, नेति, ठीक है, इन सब क्रिया से भी आप उनके बिना भी ये व्यायाम आपको हेल्प करेंगे। इट हेल्प्स टू प्रिवेंट एनी सॉर्ट ऑफ द थिंग्स विच कैन कम लेटर ऑन। तो आपको नहीं पता आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स कभी भी क्या हो सकती हैं। ठीक है, विद द डे बाय डे अगर आप अच्छी प्रैक्टिसेस अपने आप के लिए, अपनी हेल्थ के लिए अच्छा टाइम निकाल सकते हैं, भले ही चाहे 1 घंटा निकालें, 1 hour इज सफिशिएंट।
to have the time to give to yourself for your Vayayam, for your health, for your brain functioning, having increasing the mental capabilities, having a good way of living. तो आपकी आपके लिए कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत बहुत ही चैलेंजिंग है. इट्स नथिंग टफ, इट्स नथिंग चैलेंजेस चैलेंजिंग एंड नथिंग इज टफ. ठीक है, ये बहुत ही सिंप्लीफाइड और सिंपलिस्टिक वे में आपको लगेगा. ठीक है, और यही सिंपल वे आपका जब रेगुलरली आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप उसमें आप अपना वेरिएशन धीरे 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 करके, पहले एक बार कुछ प्रैक्टिस किया, ठीक है, सिंपल लगेगा. धीरे धीरे आपको जब इंट्रोड्यूस किया जाएगा और बहुत सारे ऐसे व्यायाम जो आपको लगेगा कि आपको बहुत ज्यादा फोर्स करना पड़ रहा है खुद को, कि यू आर नॉट फीलिंग लाइक टू डू दैट पर्टिकुलर व्यायाम or do the set of exercises, but day by day it will be increased, it will be given according to your own aspect of your body, according to your own bodily awareness towards yourself and आपकी mental capabilities के accordingly. तो वो जब आप इंक्रीज करते हैं, ऑफ कोर्स एट वंस इफ हु इज वेरी बिगनर, उनके लिए तो डेफिनेटली इंस्ट्रक्टर्स होते हैं. और जो ऑलरेडी योगा प्रैक्टिशनर्स हैं, फॉर देम आल्सो दे डू द सेल्फ प्रैक्टिस. व्हाट दे डू, दे लुक एट सर्टेन things which looks simple at first, and then they involve new things which they are correcting every time. तो जब भी वो अपनी प्रैक्टिसेस में कुछ भी इंक्लूड करते हैं तो हमेशा कुछ ना कुछ नया उसमें ऐड करते हैं. एंड जब जब नया ऐड करते हैं, इट गेट्स absorbed, you are getting more aware, having that awareness कि this is going to give you a good experience and you are having some progression towards your health. आपको एक ऐसा लगता है कि आपका एक आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, दो despite it might look tough, okay, but still when it is being done in the regular basis, you are maintaining yourself every time coming on the mat and doing those the physical aspects, the traditional way of having all of these set of exercises or the sequences that will help you a lot and is going to give you a good benefit in the long time if done in the on if done on the regular basis. So similarly, जब हम हठ योगा की प्रैक्टिसेस को देखते हैं तो उसमें भी आप ये सूक्ष्म व्यायाम देख सकते हैं. तो कुछ सूक्ष्म व्यायाम जैसे मैंने आपको पहले ही रीड आउट किए थे सिलेबस में, तो वो जितने भी हैं वो सूक्ष्म व्यायाम है और वो दिए जाते हैं in the hatha yoga. It is also mentioned in the hatha yoga. So to see, it is having it is just not involving the movement. लिखा जाता है कि ये एक नी मूवमेंट है, लिखा जाता है कि ये जॉइंट मूवमेंट है, देखा जाता है कि ये इट इज वर्किंग ऑन योर जॉइंट्स. ठीक है, तो ये जॉइंट मूवमेंट्स लग सकता है, ये प्रिपरेटरी मूवमेंट्स लग सकता है. कहने में हम इंग्लिश में प्रिपरेटरी मूवमेंट्स कहते हैं या वार्म अप कह सकते हैं. ठीक है, बट अगर कोई भी आप प्रिपरेटरी मूवमेंट्स बिना किसी कंसंट्रेशन के करें तो वो आपको प्रॉब्लम कर सकता है. सो टू अवॉइड एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम, इट इज इम्पोर्टेंट कि आप उनको किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं, हर एक मूवमेंट को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं. आपका आपका मोशन ऑफ एक्सरसाइजेस क्या हो रहा है, आपके मसल्स क्या इन्वॉल्व हो रहे हैं, आपके बोन्स क्या इन्वॉल्व हो रहे हैं, आपके जॉइंट्स में ईच एंड एवरी जॉइंट में क्या सेंसिटिविटी है या क्या हैज इट गॉट एनी एनर्जी, क्या उसमें कैपेबिलिटीज इंप्रूव हो रही हैं, क्या यू आर एबल टू हैव दोज फैकल्टीज. बिकॉज कई बार सिंपल, आई विल गिव अ सिंपल एग्जांपल. अगर आप नी मूवमेंट, कुछ लोग नी मूवमेंट करते हैं और उनके नी में से आवाज आती है. सिंपली अगर स्पाइनल ट्विस्ट करते हैं तो उस पे से आवाज आती है. सो दैट इज बिकॉज ऑफ दैट knee में तो of course there is some sort of the destruction of the cartilages which happens in the ages to when it is of at a certain age when you reach. But if even a person who is a young person and then also they are getting those kind of signs that they are getting the signs of having the that knee problem, that has to be
seen from a very, that has to be seen very seriously. So again, having the Vayayam, having done the Vayayam, it is going to improve and it is going to give you the benefits, having increasing and improving your capabilities, not only from the physical aspect, as it is seen that it is working on the Sthoola Sharir. No, it is the set of exercises which is working on your sthula sharir as well as your increasing the mental capabilities, because it is progressing. ये आपके लिए progressively work करता है on every organ, on every joint, on every muscle, on every bone, and these are taken as those set of exercises which is made in such a way. So, having a proper awareness of the body, once, step one, having a proper awareness of the body is going to give you a lot of benefit towards your physical aspect. And on the second aspect, on the second step, if you're doing your breathing properly, so that even if a person who is finding itself that it is working on the body level, so to get it connected to work एंड टू इंटरनलाइज इट, आपने आपको भीतरी तौर पे आप उन एक्सरसाइजेस को अब जब अब्जॉर्ब करते हैं तो उसके लिए आप ब्रीदिंग का माध्यम लेते हैं, आप श्वासों का माध्यम लेते हैं कि आप उस सेट ऑफ एक्सरसाइजेस को किस तरीके से यूटिलाइज कर सकें। जब आप अपनी ब्रीदिंग के थ्रू अपने मूवमेंट्स को, अपने मोशंस को जो है prepare कर सकते हैं, then you will find a lot of difference that you are able to have that concentration achieved. You will be concentrating. जब आपका concentration होगा, you will be able to prevent any sort of injuries and the hurt, right? Eventually, over the period of time, you will be having a good strength, a good functioning, and the different way that the organs will be bettered, and all the systems in the body will be correctly working and working really, really properly. Okay. So ultimately, our aim will be to have a balance of mind and body. And that is also, if I talk from from the point of view of the Hatha Yoga text, the Hatha Yoga has taken some different things from the ancient texts, as I told you, which was founded earlier by Maharishi Kartikya ji. So that text has been taken, all of it, and some of the aspect has been taken of the bandhas and mudras from the Hatha Yoga. So similarly, it becomes a complete way, a complete package of everything which is giving you immense benefits with the help of the Vayayam. Okay. So Vayayam, when it has to be done, most importantly, if the person is a beginner or if the person is taking the classes from a practitioner as a particular person, as if I talk about the customer, if I talk about the clients, they are getting those kind of a way that those classes are taken in such a way, having the Vayayam to be understood with the set of instructions which is given properly. Okay. Secondly, if it is a yoga practitioner, it is required to give the instructions properly in such a way that it is giving you an effect that you are able to touch that sensitivity of a person, that they are able to find the difference in themselves. तो सिमिलरली अगर कोई योगा प्रैक्टिशनर्स हैं या अगर कोई ऐसे लोग हैं जो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई खुद के लिए व्यायाम कर रहे हैं खुद के हेल्थ बेनिफिट्स के लिए, तो उनके लिए ये बहुत जरूरी है कि वो इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपरली सुने, जो भी स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं इन योगा प्रैक्टिशनर से वो समझे जाए और उसके अकॉर्डिंगली फॉलो किया जाए। सो इंस्ट्रक्टर्स को भी या प्रैक्टिशनर्स, योगा प्रैक्टिशनर्स को भी चाहिए कि आप जो इंस्ट्रक्शंस दें क्लाइंट्स के लिए, सो if the person is taking the instructions, giving the instructions, तो आप अपने क्लाइंट्स को प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप उनको व्यायाम के लिए समझाएं और तैयार करें। ठीक है, सो दैट विल बी हैविंग अ लॉट ऑफ बेनिफिट। अगर उनमें से कोई भी आपका इंस्ट्रक्शन स्किप हो जाता है, अगर आप प्रॉपरली नहीं देख रहे या फिर आपका जो वे ऑफ गिविंग द इंस्ट्रक्शन है वो बहुत फास्ट हो रहा है, तो उसमें क्या होगा, हर्टफुल होगा। ठीक है, उसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ
प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उसमें कुछ भी ऐसा हो सकता है कि जब आप ध्यान नहीं दे रहे हो तो क्या होगा कि द पर्सन हु इज एबल टू हैव दैट एबिलिटी टू अंडरस्टैंड देमसेल्फ एंड देयर इज अ काइंड ऑफ द वे दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, आप जिस तरीके से अपनी क्लास में लोगों को समझ पाए कि उनका बॉडी क्या रिस्पॉन्ड कर रहा है, क्या उनके बॉडी को, क्या उनको ब्रेक चाहिए, क्या उनको मेंटल ब्रेक, mentally they want to be sitting still for some time, so then you can have, in such a way you can prepare your classes. So as a yoga practitioner इस तरीके से classes को आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, अपने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को लिख सकते हैं या अपने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को प्रिपेयर कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली वो इंस्ट्रक्शंस देंगे, डेमोन्स्ट्रेशंस देंगे। सिमिलरली कभी कभी ये होता है, you'll find that those instructions, the batch is going on, suppose there is the batch is going on, if I talk about from the perspective of having your classes, if you're taking the classes, what happens, you do not have time, आपके पास ज्यादातर समय नहीं होता और वो आपको 1 घंटे के अंदर, whatever the class duration could be, आपको 1 घंटे के अंदर अंदर सब कुछ आपको करवाना है, जो कि आप सोचेंगे कि किसी का भी कुछ स्किप ना हो। देन व्हाट हैपेंस, आपको दोबारा से प्रिपेयर करवाना होता है क्लाइंट्स, कस्टमर्स को आपको दोबारा प्रिपेयर करवाना होता है, तो उसमें इतना प्रॉब्लम आता है कि आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज देयर वुड बी सम पीपल हु वुड बी finding themselves or having some sort of laying back that like it's just a work that if you are attending the class and that's it and it is done। तो कभी कभी ऐसा होगा, कुछ क्लाइंट्स ऐसे करेंगे कि दे विल बी फाइंडिंग देयर वेज टू स्किप देयर एक्सरसाइजेस, वो अपनी एक्सरसाइजेस को स्किप करेंगे और खुद से वो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करेंगे। आपका जितना भी बर्डन है यू विल बी ओवर बर्डन विथ द डिसिप्लिन। तो आपके लिए खुद तो डिसिप्लिन आ ही गया, आपको जब करवाना है तो आपके लिए तो डिसिप्लिन आ गया क्योंकि आपको अपने इंस्ट्रक्शंस देने, बट एट द सेम टाइम टू हैव इट completely implemented, that is a different aspect। so आप अपने इंस्ट्रक्शंस कुछ इस तरह से बनाएं कि जितने भी लोग हैं उनको बहुत ही अच्छा लगे, like it is energizing and it is able to create that ability for the people that they are able to do it। वो बहुत इंजॉय, बहुत अच्छे से उसको अब्सॉर्ब कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं इंस्ट्रक्शंस को, और वो बहुत ही इट इज गिविंग यू बेनिफिट्स तो है, हम अगर उनको बेनिफिट समझाएं तभी लोग क्लास में आते हैं, बट अगर आप उनको किसी भी तरीके से अपनी क्लास में बहुत ही अच्छी तरीके से इंस्ट्रक्शंस ऐसे देते हैं कि उनको बहुत ऐसा लगता है कि ये बहुत लाइट है, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, तो एक क्लास में जरूर अच्छा लगेगा, पहली एक क्लास में ऐसा लगेगा या दूसरी एक क्लास में कुछ ऐसे लोग होंगे जो जो बहुत डिसिप्लिन भी होते हैं, आपके पास बहुत कैटेगरीज के लोग होंगे जो बहुत ही पहले से प्रैक्टिस करें, बहुत ही इंथुजियास्ट हैं, बट ऐसे भी लोग होंगे जो इंथुजियास्ट भी होंगे, उनको अपना फिटनेस का लगेगा, बट वो कहीं ना कहीं लैग कर जाएंगे। तो उसके लिए क्या होगा, अगेन यू हैव टू बैलेंस इट योर सेल्फ, आप किस तरीके से बैलेंस कर पाते हो अपने इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली और अपने आप को उनके साथ में कैसे इन्वॉल्व कर सकते हो, तो वो बहुत जरूरी है। ठीक है, सो इन दैट वे यू प्रिपेयर दोज सेट ऑफ एक्सरसाइजेस इन सच अ वे। सभी का कैमरा ऑफ है, कैन यू प्लीज स्विच ऑन योर कैमराज एवरीवन। आप क्या करते हो कैमरा ऑफ करके? खाना बनाने का टाइम होता है? आर यू प्रिपेयरिंग द फूड? ओके, आई होप यू आर टेकिंग योर नोट्स एज वेल, यू आर टेकिंग डाउन द नोट्स, राइट? Okay, so we'll be discussing all of the preparatory movements that I had shared it, which is one, the neck movement, having the Griva Shakti Vikasaka 1, 2, 3, and 4. The shoulder movement, I will take it separately. Bhujavali Shakti Vikasaka, that also I am going to take it. So ये जितने भी हैं, पूर्ण भुजा शक्ति विकास का trunk movement, which is Kata Shakti Vikasaka 1, 2, 3, 4, and 5, and the knee movement, Jana Shakti Vikas.
All of these I'm going to take everything tomorrow, probably because it is about the six movements which is involved. So with this, I'm going to take about in 1 hour. I'm going to complete all of these six movements all together by tomorrow. So next we'll be having approximately, then we'll be having the yoga asanas, then we'll be covering the pranayams, then the dhyana, and then the life management and the preventive health, which is the classes related to the yoga, having the aspect of the life management and preventive health. So let me see if the asanas are going to take probably two classes. It can also take, the asanas can take two classes. The pranayam might also take two classes. Dhyana might take one class or might take two classes. And the classes related to life management can have just one class. That will be enough. So the basic listening practices that I'm going to cover, तो वो एक क्लास में कल कवर हो जाएगा इन द इवनिंग क्लास, ठीक है। और मॉर्निंग क्लास में भी यही कवर होने वाला है। सो अगर किसी को भी मॉर्निंग क्लास में अटेंड करना है, दे कैन ऑल्सो अटेंड इन द मॉर्निंग क्लास। ओके, आई होप आई एम क्लियर। यस और नो, आई एम क्लियर ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. और नीलेश जी, आपने कब ज्वाइन किया है? व्हेन डिड यू ज्वाइन? आज की बात कर रहे हो मैम? हाँ, मैं कब का क्लास में हूँ, जब से स्टार्ट हुआ तब का। हाँ, व्हाट? जब क्लास आपने स्टार्ट किया ना, तब से मैं ज्वाइन नहीं हूँ। मेरा अच्छा, कैमरा स्विच ऑफ था। हाँ। ओके, हाउ आर यू नीलेश जी? आई एम फाइन मैम। Okay, all right. So, shall I take your attendance, everyone? Yes, ma'am. Okay, your attendance is done. I have taken everybody's attendance. So, to end the session, let's get back and sit properly, very comfortably, and join your palms together to the center with the eyes closed and a gentle smile on the face. एक अच्छी सी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर रखेंगे। धीरे से अपने दोनों हथेलियों को इस तरह से बहुत ही कामली जोड़ देंगे और अपनी आंखों को बंद करेंगे। इनहेल डीपली एंड एक्सेल, लंबी गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर लेंगे। एक और लंबी गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर। अगेन इनहेल डीपली एंड एक्सेल completely. Now let's begin with the Om chanting followed with the closing prayer. हम एक ओम का उच्चारण करेंगे, एक बार ओम का उच्चारण करेंगे और उसके बाद एक क्लोजिंग प्रेयर करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। Take your palms together
इस तरीके से अपने दोनों हाथों को इकट्ठा करेंगे और हीट जनरेट करेंगे। Place your palms on your eyes. अपने forehead पर, अपनी eyes पर, cheeks पर, पूरे face पर अपनी हथेलियों को रखेंगे। And give the warmth of your palms to your face. आप अपने चेहरे पर एक अच्छी सी मुस्कुराहट रखेंगे और अपनी हथेलियों को अपने सामने लाएंगे। Just take your palms in front of you, have a gentle smile on your face. Slowly open your eyes. धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे और अपनी हथेलियों की ओर देखेंगे। Namaste everyone. Namaste, All ma'am. right. So we'll meet tomorrow, same time. Thank you. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Good night. Thank you. Okay, good night. Bye bye, everyone. Bye.